I'm sure everything will be fine. So when he was here, we covered up to chapter 5th, but 7वें श्लोक तक हमने किया था last time 5वें अध्याय में. अभी next month we'll be completing 3rd year here. बच्चों का तो 8 साल हो गए, 8-9 साल, लेकिन the adult session in December, Gita Jayanti ke around, we'll be completing 3 years. So at that time, so in the next session, we will go over the summary of what happened in the last 3 years. What have we been doing here all this time? है? So I think you weren't there then, लेकिन जो शुरू में थे तब हम लोगों ने, we had started with the diagram of the Bhagavad Gita. It's so funny, I was going to ask you. Okay. The GPG, if you're doing chapter 1 anywhere else, and like how you do the videos, then I would like to tap in. Yeah, we are doing chapter 1 in South Riding. Next, 2 weeks. We do the same program. The same program. There are different chapters going at different places. So I would like to tap into chapter 1. Yeah, we're just, in fact, so funny that I was just thinking about it on my way there. That's very good because अभी it's on December 4th, South Riding हमारे घर के नज़दीक ही है. वहाँ पर, in fact, आपके लिए काफी आसान पड़ेगा. Gum Spring Road से लेकर के, it's like in that area. You don't even have to come into South Riding. But that's when I will be sharing the diagram that I'm just talking about. And I would started with the diagram, like a schematic diagram. I studied engineering in India, so everything has to be diagrammatic and schematic, right? So about how do you approach the Gita, like how do you किताब उठा करके खाली chapter पे chapter पढ़े कैसा क्या, right? So there's a little bit of an analysis of it. Chapter 1, 2, 3, 4, where does what fit? Neelam Ben will remember. Bhagavad Gita का diagram जो हमने शुरू में 3 साल पहले किया था, water formation का है ना? तो मैं कह रहा था कि next month as we complete our annual anniversary यहाँ पे गीता योग की, we can revisit that to see how are we progressing along that. The idea behind that is कि जब प्यास लगती है किसी को तो पानी आता है, right? अगर बहुत प्यासे हो बिना पानी के नहीं होगा, मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो. लेकिन पानी है नहीं अगर, but if you have the ingredients, like if you have hydrogen, if you have oxygen, if you have the machine to make hydrogen and oxygen, then what do? If you know how to make water, even if you don't have water, then you have an alternative to death. पानी नहीं इसलिए मर जाए, है ना, प्यास से, उससे तो ठीक हो कि जो कुछ है उसका बना के पानी बना के. It essentially walks us through the hydrolysis process of it. It's simple. I'm making it complicated through words, but the picture is simple enough. और अंत में the point becomes, and चलो पानी तो बन गया, but you still have to drink it, है ना? To avoid प्यास बुझाने के लिए, you still have to drink it. There is an action, there is an intention, there is some ownership there. We have to own that piece. ऐसे ही भगवद गीता के अलग-अलग chapters है that they fit into that process. So we will revisit that next time, and then we'll see how far along, कितना पानी बना अभी तक, है ना? कि और कैसे, I think there is a lot of progress. Wouldn't you say? You watched the movie, Martian. Yeah, that's the way. Like it's a survival thing only, right? He goes and he stays alone over there. Like the ship is gone and he's stuck over there, and then he makes the water. Oh, is that? I've not heard of it. Okay. Yeah. Oh, that's good. So we should. Really, one question is, if you missed chapter 1, 2, and 3, can you catch up from chapter 4? Or? Yeah, you can totally catch up. That's the beauty of these sessions. There's no link, really. Ask her, right? Yes, this is my 6th or 6th class. Okay, so no, very non-traditional way of going to Gita. हम लोग रटते नहीं हैं, पढ़ते में भी hardly 2-3 श्लोक होते हैं एक सेशन में. कोई जल्दी नहीं अपने को. ऐसे आराम है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, बिल्कुल सालों साल चल रहा है, बिल्कुल. We cover like 3 साल में we're still stuck in the 5th chapter. You don't like mark it up anything, just you will go through 1 or 2 slokas and then it will make you understand what is the concept of that and how you can implement it into your day-to-day life. Yeah, we hold each other's hand. You know, there's no rule. We say there's no rules, just love. यहाँ पर this is a very safe place. That we all have our vulnerabilities. We bring those here, we share with those, and we walk away with some security, some sense of belonging in God.
सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो सभी जगह पे है ना, कुत्ते बिल्ली भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक दूसरे के साथ दौड़ के भोगते हैं, या गरबा में, दिवाली में, फेडेक्स फील्ड में रेस्लिंग गेम चल रहा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो सभी जगह पे है. बट दिस इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन गॉड कॉन्शियसनेस, फाइंडिंग आवर वननेस इन गॉड, एंड दैट इज द हाईएस्ट लेवल, दैट इज द हाईएस्ट टेस्ट. Once we taste that, बाकी सब फीका पड़ जाना है. Then you can still enjoy the game and all that, the garba and the mitai, लेकिन you're not dependent anymore on that. That's the power of this. वो नहीं होगा तो बेचैनी नहीं होगी, वो नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, राग, लोभ, क्रोध, द्वेष कुछ नहीं होगा. अपने जैसे वैसे पहले फर्स्ट क्लास बन जाएंगे, उसके बाद में फिर बिंदास जीवन. Right? That's our mantra. Yeah. First class. Huh? Yeah, exactly. First class bindas. That's the promise of this gathering. I see. Whatever we will do, do as part of it, we will do first class, not second class, never third class. Right? Always first class, and everybody knows what that means. Inside, we know whether I did what I did first class or second class or third class. Right? So our commitment, the way we grow here is like everything we do is first class. और उसने तुरंत absolutely execute that, उसके बाद बिंदास हो जाते, जो होगा वो होगा. I've done it first class, nothing less than that. उसके बाद होना होगा तो होगा, काम नहीं होगा तो नहीं होगा. Move on, right? So it's a very liberating feeling, and the only prerequisite here is an open mind. There is no money, there is no food, there is no arti, there is no picture, there is no kuch, there is nothing involved. Whenever you have time, come here or join us, right? But bring an open mind, because you will be caught. If you are here with a closed mind, it will be evident. So bring an open mind. Remain open ki ho sakta hai. Bhagwan ho sakta hai. There may be something, someone like God, or these words may have been spoken, or that may be. So we hope rakhe, open mind rakhe, maybe that's possible. Because then, once that seed is planted deep in the, and koi kahe ki ye seeds kya hone wala hai? लेकिन उसको खड्डा खोद के जब हम लोग डाल देते, अभी बल्ब 2-3 हफ्ते पहले भी planted 128 bulbs. ठंडी में plant करते हैं ना? Yeah. With the hope कि 6 महीने बाद सब फूल आ जाएंगे. तो open mind है ना कि हो सकता है possibility. ये तो जमीन में गाड़ दिया है, उसके ऊपर पत्थर मिट्टी डाल दी, लकड़ी डाल दी, सब ये कैसे होगा? होगा ना, होता है. कितनों ने देखा है? ऐसे ही मैं कहता हूँ, क्या नहीं होगा, सब होगा, होता है, इसी से होता है. In fact, दूसरा सबसे बिगड़ता है. Yes, I agree with you. I'm grateful for that, because this is like I don't want. And the truth is, the reality, the Gita says that you already were on that path. This is just a memory coming back. You know, that the credit should be given where credit is due. Like, so let's not forget, 100% of the credit of this is to the Gita, and then beyond the Gita Sar, jisne Gita sahi, and 100%, not 99%. Don't let anyone ever fool you, and certainly don't let me fool you for a moment. 100% of this belongs to Hari Om. Vishwas ho to kripa hogi. We were just talking about bulbs germinating, Vishwas, hope, to like aise kehte kripa. Oh, kripa. 100% trust. I don't know. I'm trying to create it, so I'm having a hard time, but it's okay. Patience is the word too, but I can't have that. और ऐसा I was about to say कि ऊपर से कृपा बरसेगी. देखो बरस पड़ी. We have to thank Kiran for that. So next time we will go through that schematic diagram. If you're interested, you can share your email. I don't know if any of you get the monthly emails, but every weekend rather, we have a program. कहीं न कहीं अलग-अलग जगह पे, Maryland, Virginia mostly. तो कहीं जगह पे first chapter चल रहा है, कहीं पे fifth यहाँ पर चल रहा है. We also do theme-based classes. जैसे कहीं किसी की मृत्यु हुई थी तो death related. So there is this thing going on. Like there are 3 sessions so far. What does the Gita have to say about death? How should we understand death in the context of Gita? भगवान के क्या विचार है ना? भगवान कहते मैं ही मृत्यु हूँ, for example. मृत्यु भी मैं ही हूँ. तो फिर अगर मृत्यु प्राप्त हुआ तो भगवान प्राप्त हुआ. फिर दुख क्यों? है ना? But then अगर दुख न होना चाहिए तो डर क्यों? पहली बात तो क्या?
But it is the first more than the dukh, it is the dar. Yeah. I mean, like, so you started the whole, I started the meditation, and going through the steps. And when you told me it is the most toughest part, at that point I did not realize that yes, it is the most toughest part, because I didn't know that I had to face my inner demons at that point. And I'm realizing कि दुख से भी ज़्यादा हमें डर है, and the डर affects me more than the dukh. Yeah, I think that's very astute. What's the difference between dar and dukh? I'm just... Yeah, no, it's a good question, but you know what you should do? Chintan karo. I don't know the difference. I mean, दुख होता है और डर लगता है, ये दो बातें अलग तो है ना. कोई जैसे कोई अगर कोई चोरी हो गई या कोई मर गया तो दुख का अनुभव होता है, नेसेसरली डर नहीं लगता है. या कोई कुत्ता भाग रहा है या अपने आप की मुक्ति का समय आ गया तो हो सकता है डर भी लगेगा, दुख भी लगेगा. Like I'm not able to literally see that. And then I found that when I am going through this whole last 3 weeks, I've been pretty up with my whole thing. So like I find that it is more difficult to come face to face with your dar than with your dukh. Like, Totally, 100%. Dukh is almost an outcome of dar. The root cause is the insecurity, right? The insecurity of it. So 16th chapter Bhagavad Gita, it starts with abhaya. It's like the first promise, first promise of the Gita. The first punch we get is abhaya, right? Bhaya samukti. Once we truly start understanding the Gita, बिल्कुल फाड़ के फेंक देगा भय को, like nowhere to be found. तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता, कि इससे क्या होगा, ये क्यों करे है ना, तो इससे अभय होगा, भय से छुट्टी, सात्विकता आएगी, सत्व. The choices will be purer because we know what's the right choice, what the right thing to do, what the wrong thing to do. Not able to. लेकिन इससे the second promise is सत्व बढ़ेगा, discrimination बढ़ेगा, कि सद असद विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं. What is the right thing to do, what is the wrong thing to do, think, say, even, right? मनसा वाचा कर्मणा, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए. उसमें फिर सात्विकता है, राजसिकता है और तामसिकता है, राइट? ये सब इसके पहले, इसके बाद में 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में 14th chapter गुणत्रय विभाग योग. Last time someone came that I recommended that they read that chapter. It may even be Dushan Bhai, I'm trying to remember. Gunatraya Vibhagi, इसमें the division of trigunas, सात्विकता कैसे आती है, राजसिकता और तामसिकता, उसके लक्षण क्या होते हैं, तो उसमें से सत्व छुड़ाने वाला है. तो इसलिए that's why we want to make more sattvic choices. It's liberating, it's freeing up, not binding. तो दूसरी promise गीता की सात्विकता, अभयम सत्व, समशुद्धि, अच्छी तरह से अंदर से प्योरिटी. हम ऊपर से मीठी बातें तो कर ले किसी से, चापलूसी के पटाने के लिए, लेकिन अंदर से मोटिव पटाओ कि वो डिस्काउंट दे दे, एक्सपायर्ड कूपन ऑनर कर दे, या फिर मॉर्गेज रेट 3.94 का 3.75 रेट में दे दे. सो वो संशुद्धि नहीं है ना. मुंह से कह रहे हैं, मन में कुछ है, उसमें शुद्धि नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा. उतना वो डिस्काउंट तो मिल जाएगा, लेकिन उस वस्तु से जो आनंद प्राप्त होना था वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है. दिस इज अ फंडामेंटल लॉ वी आर वायलेटिंग व्हेन वी जब कह रहे एक, सोच रहे एक. भगवान के नियम को लांग के हम कहाँ जाएंगे, भगवान की सृष्टि में, राइट? सो वो अलाइनमेंट आएगा. संशुद्धि मतलब वी विल बी अलाइन्ड विद इट, कि जो जैसे द राइट थिंग विद द राइट टाइम. तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता, ज्ञान की प्राप्ति होगी कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ संबंध क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है. This is all. So the biggest ज्ञान is like मैं कौन हूँ. There's no bigger ज्ञान than that, right? Essentially, the biggest thing to know in the world is not solar system कैसे बनी, सूरज कब बना, ये कैसे झाड़ कैसे उगता है, whatever, और इसकी कैपिटल क्या है, ये सब. But the biggest thing, the most powerful thing to know is who am I? Who the heck am I? Right? So उसकी प्राप्ति होगी इसके द्वारा. अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग. How do I unite with super consciousness, with God consciousness? भगवान का अनुभव कैसे हो? In other words,
and how do I walk in it? योग में उससे जुड़ गए, है ना? किसी एयरप्लेन के अंदर अगर बैठ गए हम लोग, तो वो जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो हम भी ऊपर जाएंगे, वो नीचे गिरेगा तो हम भी नीचे गिरेंगे, वो टेक ऑफ लैंडिंग तो लैंडिंग, अटक गया तो अटक गया, लटक गया तो लटक गया, क्योंकि हम उसमें बैठ गए. She's laughing because 2 days from now she's going to India. हाँ बिल्कुल. Yeah, देखो, she's been studying the Gita. I'm not going to die, my body is going to die. That's ज्ञान. और that will happen no matter what. विमान में बैठो चाहे न बैठो, है ना? So ज्ञान योग तो फिर भगवान के साथ कैसे जाए? उसकी पूंछ को पकड़ के जिधर वो जाएगा उधर कैसे जाए? भगवान जहाँ भी जाएगा वो फर्स्ट मस्ती रहेगा ना, बिंदास रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, आनंद ही रहेगा, मजा ही मजा रहेगी हमेशा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने बादशाह के बेटे बन जाएंगे, है ना? So this is not a myth. This is not. I'm not trying to sell you something, right? So और व्यवस्थित. शरीर की भी टेक केयर ऑफ नहीं करना पड़ेगा, आत्मा ही होगा भगवान के पास. और वो आके करेंगे जिस वो, है ना? वो ये शरीर तो नहीं रहेगा ना, भगवान के पास रहेगा. सूक्ष्म शरीर रहेगा. ये जो स्थूल शरीर जिसे समझते हम लोग, है ना, जिसमें 5 तत्व होते हैं, इसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व. So I mean we're obviously distracting from, but this is all in the domain of ज्ञान. 5 तत्वों से बना शरीर है ना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु, तेज और आकाश, meaning space. So essentially when we die, we don't die, we leave this body. खाली पृथ्वी तत्व और जल तत्व रह जाता है ना. पृथ्वी तत्व की मिट्टी बन जाती है, राख बन जाती है, जल तत्व भाप में निकल जाता है, और उसमें से जो बाकी जो है द स्पेस इनसाइड, जो स्पेस है ना, नाक में स्पेस है, पेट में स्पेस है, तो दूसरे स्पेस के साथ एक हो गई, जैसे है ना, द स्पेस बिकेम द स्पेस इनसाइड बिकेम वन विद द स्पेस आउटसाइड, सिंपल एज दैट. और जो तेज तत्व है, अग्नि है, 98.5 डिग्री पकड़ के रखा है अपने आप, कैसे रखा है, राइट, मेंटेन किया, वो बाकी इट विल बी डिसिपेटेड इन द रेस्ट ऑफ द हीट एनर्जी. तो ये जो और कौन सा वायु तत्व, राइट, एयर विल मिक्स विद एयर. अभी जो मेरी ब्रीदिंग अगर रुक गई तो अंदर जो हवा पकड़ के रखी है, when that happens, that air will become one with the rest of the air, right? But I don't disintegrate, I don't die, I don't vanish, I still exist. ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है. स्वर्ग की यात्रा होती है, नरक की यात्रा होती है, तो ये कैसे होती है? फिर अगर मैं मर गया तो कहती है वो सूक्ष्म शरीर से होती है. There are 3 kinds of bodies we have, and we're none of them, we're neither of them, and we have 3 bodies right now. You're carrying 3 bodies. Everywhere you go, you carry 3 bodies. I haven't experienced yet, but I totally agree with you. Meaning, I believe in you. Okay. Thank you. ये मेरी अपना माल नहीं है. Whenever you're sitting and telling, yes, that's why. Shastro, I can, and you should question. I highly recommend, I highly encourage it. Question authority. I'm no authority. I borrow authority from the Gita, from Upanishad, from Ved, जो भी. लेकिन it's okay to question even that. ये तो बापों का बाप बैठा था कृष्ण, और इसको भी इसका सखा अर्जुन question पे question किया जा रहा है, right? Pretty much every other chapter when you open, he's questioning him. How come? How do I know you exist? How can you show me your God? Right? 10th chapter. So it's okay. लेकिन समर्पण भावना से हो, arrogance से न हो, right? विनम्रता से हो, सचमुच में honestly inquiry की भावना से हो, not audit करने की भावना से, and not to prove someone wrong. So because then you will not receive, because the person will move on. ऐसी तो कोई जिद नहीं है कि इसको मिलना ही चाहिए, है ना. हम अपनी झोली उठा के हर वीकेंड को, we have 2 programs every weekend, Saturday, Sunday. So लेकिन जिसमें तद्विद, ये भी गीता में आता है, देखिए इतने से श्लोक ये भी आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. कि अगर सचमुच में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ना, ये लास्ट टाइम 4th चैप्टर में हुआ था, अर्जुन को कृष्ण कहते कि तद्विद्धि विधि पूर्वक, जो अप्रोप्रिएट जो हो, गधे की नहीं, अगर नहीं गधे समान नहीं, अगर ह्यूमन से ह्यूमन जैसे एक्ट करे, तद्विद्धि प्रणिपातेन, ह्यूमिलिटी से. प्रणिपात मतलब जैसे प्रणाम करके, ये इन अदर वर्ड सिंबॉलिकली ह्यूमिलिटी से, like understanding that I am at the receiving end, you are at the giving end, and so therefore please tell me, tadviddhi pranipatena pariprashnena. Ask the question, but don't question the person. It's beautiful Sanskrit language. Pariprashnena is so cleverly worded, so intelligently.
प्रश्न है ना, नहीं प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाओ, नहीं क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं, परिप्रश्न है, as if you are asking a question. Ask it in a way so that the person will understand that you want to know, but you're not questioning them, right? किसी महापुरुष के, गुरु के, संत के आगे बैठे तो उन्हें नहीं क्वेश्चन करे, उनकी अथॉरिटी नहीं क्वेश्चन करे, लेकिन हमें फिर भी प्रश्न तो पूछना है। तो इस भावना से पूछे कि जो प्रश्न पूछना है उस विषय के बारे में मुझे, उनको ना क्वेश्चन करे, एंड दैट्स परिप्रश्न, राइट, नॉट प्रश्न। सेवया, be willing to offer something, like serve them or बैठे रहे राह देखे। So I mean, so धीरे धीरे जैसे जैसे हम विनम्र होंगे इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके, राइट, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। फिर वो महात्मा क्या करेंगे, ज्ञानिन तत्वदर्शिना, वो ज्ञानी होते, तत्व को स्पर्श किए हुए होते, अनुभव किए होते हैं, राइट, वो बिल्कुल बिंदास इजीली दे देंगे, उपदेश दे देंगे, है ना। उपदेश, देश इज लाइक द डायरेक्शन, देश काल कहेंगे, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स वेयर इट इज, यू स्टिल हैव टू गो, है ना। कोई महापुरुष, कोई संत का सर पे हाथ रख करके सब खोपड़ी खुल जाएगी, काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसी बात तो कहीं नहीं लिखी है ना। विश्वास चाहिए, लेकिन अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा की बहुत नितांत आवश्यकता, इनफैक्ट श्रद्धा से ही होगा, श्रद्धा से ही शुरुआत होगी, श्रद्धा में ही अंत भी होगा, right? Last time we talked about it, Shraddhavan labhate jnanam tattara sanjate indriya. As this is also from the Gita, I tell you, you don't have to go beyond the Gita. This is a shlok from Gita. कि जो श्रद्धावान होगा उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। A little kid going to kindergarten has faith in the teacher. Then maybe there is such a thing as A, B, C, maybe 1, 2, 3. Maybe there is a point to counting the numbers. आगे चल के वो आइंस्टाइन बन जाता है, कोई PhD लिटरेचर में हो जाते, but it started with some faith. Yeah, that this is my father or this is my mother. The child doesn't know, but totally believes. तो आगे चल के कितना बड़ा हो जाता है, you pay for his college and everything else, but it all starts with faith. So very, very distracted from the main topic, but still within the domain of the Gita. Everything comes in the domain of Gita. So we cannot be lost. With Krishna's name, there is no way to get lost. Right? With Shri Krishna's name in our heart, there is no, कहाँ जाएंगे? उससे कहाँ भागेंगे? So अगर वासुदेव सर्वम, 7th chapter, इति समात्मा सुदुर्लभ, ज्ञान विज्ञान योग, सभी में अगर वासुदेव है तो भागोगे किससे? भागेंगे क्यों? है ना। इस ज्ञान से धीरे धीरे अभयत्व की प्राप्ति होगी, न ईर्ष्या रहेगी, न जलन रहेगी, न भय रहेगा, न क्रोध रहेगा, है ना, न कोई बुरे विचार रहेंगे। एक जब अनुभव हुआ कि मैं ही सचमुच में सब में हूँ, सब मुझ में है, इनफैक्ट गॉड इज इन मी, गॉड इज इन देम, आई एम इन देम, ऑल ऑफ देम। जैसे हम लोग समुद्र का अपना, आई वाज थिंकिंग ऑफ समुद्र, लेकिन आई वांटेड टू से ड्रीम, स्वप्न का अनुभव। We talk about the dream example, right? So, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है, और उसके आगे चलते स्वाध्याय. So we'll go back from this 15th chapter back to the 5th chapter here, right? But to acknowledge what you are saying, अभयत्व की प्राप्ति बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है. You feel very safe, you feel very secure. It starts with feeling that at least for that time, जब ध्यान कर रहे हो उस समय तो जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका इफेक्ट बढ़ते जाता है ना. जैसे कोई चूल्हा जला दिया, गैस जला दिया, तो फायरप्लेस लगा देते, तो इनिशियली बिल्कुल उसके चिपक के जाएंगे तो ही गर्मी लगेगी. But if you let it go for hours together, फिर धीरे धीरे the house starts to warm and you can feel the warmth, right? चटका नहीं बैठेगा, लेकिन पता चलेगा कि there is some warmth. ऐसे if you're steady and consistent in the practice of dhyan, it percolates and it pervades the rest of your life. शुरुआत उस 20 मिनट से होगी, लेकिन धीरे धीरे takes over. Your day will go well. The whole life will be fixed also. So our formula here, it's an open secret. The formula is the combination of dhyan and Gita. That's what we suggest, that you have to commit to. You have to read the Gita, 1-2 श्लोक, 3-4 श्लोक जैसे नमने, और ध्यान करें. And then what we also say यहाँ पर for your benefit is कि 24 घंटे मिले हैं तो कम से कम 24 मिनट का ध्यान हो, right? काफी सस्ता सौदा है. 1 घंटे में 1 मिनट अगर अपने लिए निकाला, अपने लिए अगर स्वार्थ लगता है तो कहे ठीक है भगवान के लिए निकालो, है ना.
तो परमार्थ हो गया। तो वेदर स्वार्थ की भावना से अथवा परमार्थ की भावना से, परमार्थ देखो शब्द कितने निकल जाते हैं दिमाग से फटाफट, है ना, दैट्स व्हाई ये रटते नहीं हम लोग, वी डोंट मग इट अप। परमार्थ शब्द कितनी बार सुना है ना, 1000 बार तो सुना ही होगा कम से कम। परम इज द फाइनल अल्टीमेट, अर्थ मीन्स प्राप्ति। परमार्थ के लिए परमार्थ के लिए कर रहे हैं, परमार्थ परमार्थ परमार्थ, दैट मीन्स द फाइनल, द मोस्ट बेनिफिट, द बिगेस्ट गेन, प्रॉफिट, है ना। अभी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ट्रम्प आया है, हिलरी है, जो भी ऑल दैट, तो क्या अर्थ की प्राप्ति हुई? दिस इज टॉकिंग अबाउट परम अर्थ, endless, limitless, infinite. We say that in these seven we become forever millionaire. We don't want एक बार millionaire हो गया कैसे भी, we want forever millionaire. नित्य सन्यासी, remember chapter 5, इसी 2-3 सेशन पहले यहीं पे ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, नित्य, forever, permanent. ये क्या बात है कि एक बार थोड़ा अनुभव कर लिया, आनंद हुआ, फिर छूट गया? No, that's not for us. We want it permanent, forever. And we can. In fact, we should settle for nothing less than that. That's our right. We were destined for that. We're made for that. We've been asked to claim our legacy. अपने बाप का माल है, जाके claim करें. All right, give it up, right? Take it out. Give me the keys to my kingdom. But you have to show up. You have to go. You have to claim. You have to suggest. You have to say that this is mine. And that takes some practice, some effort, which is like, for example, attending this session or doing ध्यान अथवा गीता पढ़े। ये पक्की बात है कि भगवत गीता और ध्यान के कॉम्बिनेशन से फिर लाइक ऐसे समझाएं कि उल्टा ना टंगना पड़े, नाक ना दबाना पड़े, पेट ना अंदर करना पड़े, इधर उधर तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, भगवत ये वो ना करना पड़े, प्रसाद महाप्रसाद वो सब करे, नेचुरली कोई ले जाते तो जाए करे, इसमें कोई बुराई तो है ही नहीं, लेकिन इसकी जरूरत ना पड़े, डिपेंडेंसी ना हो, है ना। अपने घर बैठे बादशाह का अनुभव करें। Don't you want that? Like what you talk about is yoga, right? I mean, the exercise is different than this Gita. Like I'm trying to understand, those are all part of like big circle where each idea is like a piece in that big puzzle. So those like yoga and dhyan and everything is part of that. It's more like a staircase, not so much a puzzle. Foundational, like it's a big preliminary, rudimentary, elementary. जैसे elementary school में कोई गया तो you cannot expect कि PhD के जैसा अनुभव होगा या इतनी कमाई होगी, इतना धनी बन जाएगा. High school dropout very rarely has a chance of having a really good lifestyle of a college graduate, for example, right? There can be exceptions. तो ऐसी बात है कि जो अपने शारीरिक योग में अटक जाए, प्राणायाम कैसे करे, ध्यान इतना है क्या, आसन कैसे करे, उल्टा कैसे टंगे, एक पैर पे कैसे खड़ा हो, ये वो, that is good for the body. Again, remember we just talked about it. There are 3 bodies he carries. स्थूल शरीर, everything that you're talking about is limited to स्थूल, मतलब बाहर का जड़, जिसे अपनी बुद्धि नहीं है, स्थूल का मतलब जिसको ड्रैग करना पड़ता है. यहाँ पे इस शरीर को कैसे ले, अपने आप तो नहीं आया, तुम लेके आए ना इसको, बिठाया, गाड़ी में बिठाया, सब कपड़े पहनाए, सब लेकर के आए. अब यहाँ से घर जाओगे तो तुम तो लेके जाओगे ना, इसमें तो ऐसे ही बैठा रहेगा. ये कहेगी चलो उठो महाराज, हो गया सेशन. तो लेकिन जब तुम उठाओगे तब उठ के लेके जाएगा. और जब हम अब नहीं उठा पाते इसको तो क्या करते हो, 4 लेके उठा के ले जाते, फेंक के आ जाते. ये अब अपने आप नहीं उठा पाएगा, है ना. तो इसको स्थूल कहते हैं, स्थूल शरीर. तो इसी को अपने बड़ी मुसीबत होगी, अपने आप को यही मान लिया कि जो स्थूल शरीर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो इंद्रिय और मन से बना हुआ है. ये आंख जो देख रही है, इट्स नॉट जस्ट आई बॉल, राइट. आई बॉल ये तो क्या, हड्डी, मज्जा, तंतु, रक्त, मांस, पेशी से बना हुआ, राइट, बोन्स, फ्लैश, ब्लड, उससे क्या. लेकिन समथिंग इज इन विद इन इट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल, समथिंग स्पिरिचुअल दैट इज एबल टू परसीव, टेक इन द व्यू एंड मेक सम सेंस आउट ऑफ इट. So this is my sister, this is my brother, right? This is my house, or this is not my house. तो जो उसके अंदर जो सूक्ष्मता है, subtlety, मतलब you cannot grasp it. Subtle means you cannot hold it, you cannot see it, you cannot touch it, you cannot feel it, right? That's subtle. जितना subtle हो, सूक्ष्म हो, पतला हो, उसको हम कहते हैं ना सूक्ष्म है, subtle है. सुई के छेद को कहते हैं कि बहुत सूक्ष्म है. तो very very subtle, so subtle that you just can't see. लेकिन है अंदर. खाली अगर आँख का गोला होता था, खाली मैटर अगर होता था,
तो कुछ पता नहीं चलता था, right? It's obviously more than matter, something inside, and that's the सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन भी आता है. हम कहते हैं मन में विचार आया, मन कहाँ है तो पता नहीं है ना. There is no organ, there is no doctor for मन, there is no organ जिसको फिक्स करे तो ठीक ठाक करे. काट के फेंक देना, सब मन को सब सर्जरी करा के निकाल दे, प्रॉब्लम सॉल्व, मन ही निकाल दिया. तो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि no one knows where मन is. Why? Because सूक्ष्म है, subtle है. So that's the second, मेरा मन, तेरा मन, right? Or the third is Karana Sharira. Okay, what's the cause? Where did these two come from? What is the cause? Why did I even take this kind of body? Why did I get the body of a human being? Why do I understand the way I understand it? जैसे एक ही बात को अगर हम दोनों देखें, you might see something in it and I might see something very different in it. It's the same thing. In fact, maybe we see the same thing, but the inside what I think of it, I might think of it as my sister. You might think of it as your mother or daughter or something else, someone else, right? Depending on अंदर कैसा माल भरा है, right? सूक्ष्म में. So the root cause of it, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीरों को हम चला रहे हैं. हम तीनों में से कोई नहीं है. So योग भी ऐसे ही प्रोग्रेस होता है. जब हम लोग आसन करने लग गए, श्वास की प्रक्रिया करने लग गए, प्राणायाम करने लग गए, तो we're still limiting to at best maybe a little bit of सूक्ष्म शरीर. क्योंकि मन कहते प्राणायाम के बाद मन शांत हो गया थोड़ा, है ना. तो मोस्टली जब तक स्थूल शरीर आसन करके, एक्सरसाइज करके, the body is in shape and all that, all the goodness. Again, good stuff. There's nothing negative, nothing wrong, nothing bad about it. No reason to leave it. But not the final, not the complete package. So Bhagavad Gita then takes it to, that's why I said it's more like a staircase, takes you to the final pedestal, जहाँ पर सचमुच में जाना चाह रहे. शरीर को कितना भी ठीक ठाक रखे क्या करेंगे, कब तक रख पाएंगे, उससे होगा क्या. दुख तो अंदर होता है ना, अनुभव जो होता है. शरीर को कितना भी रखा लेकिन किसी ने अपमान किया या कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया या बच्चों ने नहीं माना, तो शरीर को तो कुछ नहीं होता, तो अंदर में दुख होता है. Yeah, I mean the mind is in the body. I don't know what that connection is. No one knows where the mind is, right? Yeah. But yes. And there is Atma in all this. When we are talking about the स्थूल Sharir and the Sukshma, the Karan. Yeah, so where is Atma in all this? What is Atma? I mean, we were talking not about the outside body, but the inner body or the inner thing. So every time when we listen, people always talk about the soul, the Atma, which is inside us, which nobody can see it. People always see the outside body. Yeah. So where does that fit in there? So, pehli baat ki Atma, because it's not matter, right? It's spirit. So these are not, this gets to a different level of conversation. The terms are different. The meanings are different. We should talk about it, but I know that there may be some disappointment in you, like pura connection no hoga to. But I am patient and I ask you to be patient. It will take time, right? Angushta matra purushena chinmaya hridhi sarvada. शिव जी का वचन है. I promise you that मैं अपना माल नहीं रखूंगा तुम्हारे सामने, right? Skanda Puran, 84,000 verses. Think of that. One verse is 2 lines. Skanda Puran, Skanda Senapati, right? 84,000 verses. उसमें शिवगत गीता आती है. Skanda Senapati Kartikeya Swami is telling the story of my conversation between my parents. My father told this to my mother. So इसमें एक part आता है जिसको शिव गीता कहते हैं. उसमें one of the chapters is अंगुष्ठ मात्र पुरुषेण चिन्मय हृदय सर्वदा. कि अंगुष्ठ मात्र मतलब इतना अंगुष्ठ इतना there is a cavity this much. हृदय, like which means cavity, cave. चिन्मय है, लेकिन that is spiritual. It's chaitan, it's conscious, it's awareness. It's not made of bones. It's not made of flesh. There is no blood in it. There is no matter in it. It's not matter, and therefore we will not fully actually understand it. And in fact, we are that. That's the problem. We are not the covering, the bone, the flesh, that we are as if reflecting upon ourselves to try to cover back and understand who we are. The angushta matra purushena. Purush kaha hai use. That's not to ऐसे कोई स्त्री को कम दिखाने के लिए नहीं, but because it's just the quality of the purush, the existence, right?
इट्स अ सेपरेट टॉपिक, सम अदर टाइम. अंगुष्ठ मात्र, इतना तो है. अंगुष्ठ मात्र मतलब इतनी सी कैविटी है. पुरुष है ना चिन्मय, चेतन है, अंश है, अवेयर है, हृदय केव में बेटा सर्वदा हमेशा के लिए, एवर एग्जिस्टिंग, सत चित आनंद कहते हैं ना. तो इसे के देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस. एक तो आता है कि हृदय में गुहा है, इन द केव ऑफ द हार्ट. हृदय कहा इसलिए सम पीपल इंटरप्रेटेड एज हृदय मतलब द केव ऑफ द हार्ट. देयर इज एक्चुअली अ कैविटी इन द हार्ट. ऑब्वियसली डॉक्टर्स डोंट नो उसमें क्या है, उनको तो खून देख पाते हैं, ब्लड देख पाते हैं फिर, बट दैट स्पेस इज कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल. कभी भी हम कहते हृदय को बहुत अच्छा लगा, दिल में बहुत अच्छा लगा, दिल में सुकून हुआ, मेरे दिल को ठेस पहुंचाई, एंड यू वांट माय हार्ट, यू टच माय हार्ट, आई फील गुड इन माय हार्ट. व्हाई डू वी से दैट? नेचुरली अपने आप कहते हैं, किसी ने पढ़ा है नहीं ऐसे कहने को. बट पे अटेंशन टू योर वर्ड्स. बहुत बुरा लगे, बहुत अच्छा लगे, बहुत एक्साइटेड हो, इट ऑटोमेटिकली गोज टू द हार्ट. यू नो, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट. So tell me the truth. अपने हृदय से दिल के ऊपर हाथ रख के कहो. Why again and again? Why does humanity keep going back to the heart? What's the big deal about the heart? है ना? Brain, कोई कहे कि ज़्यादा is maybe more important function than the heart. लेकिन that's because शास्त्र में लिखा है वहाँ पर in the cavity of the heart, it's about your thumb's size cavity. That space is spiritual, and that's where Atma lives. That's one interpretation. The second you may have heard जो ईदा और पिंगला नाड़ी के बीच सुषुम्ना नाड़ी होती, जो नाड़ी जागृत, कुंडलिनी जागृत करने की बातें कई सुनाई देती है ना. जो स्पाइनल कॉर्ड है, सप्त चक्र है, मूलाधार चक्र है. गणपति अथर्वशीर्ष जब हमने किया था उद्देश्य किया ना, वी डन सम डेफिनेशन ऑफ दैट कि मूलाधार स्थित हो से नित्यम गणपति के लिए कहा, क्योंकि बिकॉज यू आर दैट लाइफ फोर्स एंड यू आर ऑलवेज सिचुएटेड इन दैट मूलाधार चक्र में. सबसे नीचे मूलाधार चक्र राइट पीछे, और सबसे ऊपर ब्रह्म सहस्त्रसार चक्र, जो सहस्त्र कमल भी कहते हैं, जहाँ से यहाँ पर जो टालू होता है बच्चों का, जब जन्मते तो सॉफ्ट स्पॉट होता है ना, वो आंखें तो खुला. Isn't that a wonderful thing? कैसे सब बंद होता है, वहाँ पे खुला रहता है सॉफ्ट स्पॉट. और कहते जब योगी निकल जाता है, योगी प्राण छोड़ता है, तो उसके प्राण टालू से निकलते हैं. There is that provision there. So and then there are different, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, right? You know the 7 chakras about that. So and the Kundalini Shakti travels up, जैसे मूलाधार में लॉक्ड है जैसे. तो most people just ऐसे ही जन्मते ऐसे ही मर जाते हैं, वहीं के वहीं रुक जाती है कुंडलिनी शक्ति. Now this has nothing to do with the first chapter, just so you know. लेकिन that's okay, right? But Bhagavad Gita इससे मिलती जुलती है. So there are two spinal cord में, there are two kind of nerves. हमारे उपनिषदों में संस्कृत में से एक इडा नाड़ी कहा, इडा नाड़ी राइट, नाड़ा इज लाइक अ थ्रेड, और एक दूसरी पिंगला, एंड दे आर ऐसे कहा कि दे आर ट्विस्टेड, यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, और नीचे में दे फॉर्म अ कैविटी देयर. उनके बीच में सूक्ष्म कैविटी है, वेरी थिन कैपिलरी जिसे कहते हैं ना, कैपिलरी एक्शन जिस कैपिलरी ट्यूब, उससे पिंगला सुषुम्ना, सॉरी इडा और पिंगला में से सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं. So when जब कुंडलिनी जागृत होती है, तो then it starts to rise. That life force is the Atma. To answer your question, the second interpretation is that life force which is locked in the form of Kundalini. It's called Kundalini because it takes the form of energy. That's the feminine aspect of it. पहला मैंने कहा पुरुष, right? अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मय हृदय सर्वदा. पुरुष व्यक्तिमत्व, और लेकिन खाली पुरुष को लेकर क्या करोगे, राइट? द एनर्जी इज नेसेसरी, द क्रिएटिविटी इज नेसेसरी. द मैन गोज अर्न्स द मनी, पैसे खा थोड़ी सकते हैं, राइट? किसी को डॉलर खिलाओ, दे लो $100 खा लो, पेट भर पेट खा लो, कोई नहीं खा पाएगा डॉलर. जब माँ आएगी उसका अनेक व्यंजन बनाएगी, $100 में क्या क्या नहीं बनेगा, उसमें फिर मजा आएगा. तो ऐसे ही जो भगवान की जो स्त्री शक्ति है, राइट, क्रिएटिव पावर, तो वो शक्ति, इसलिए उसका स्त्रीत्व स्त्रीलिंगी है, कुंडलिनी शक्ति, राइट? शिव है और शक्ति है, दोनों की आवश्यकता, दोनों रूप है, तो एक ही, दोनों रूप है ना. सो दैट इज लॉक्ड अप इन मूलाधार चक्र में. और जब तो उसकी ओर ध्यान नहीं देते, अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते, जब लोग हम है कौन को समझने का प्रयास ही नहीं करते, तब तक हम नीचे के 3 चक्रों में ही अटके रहते हैं. शंकराचार्य कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भय आ गया उसमें भी, राइट?
आहार मतलब खाने पीने में की चिंता में पड़े रहते हैं मोस्टली. ग्रोसरी शॉपिंग, स्टफिंग और रेफ्रिजरेटर, कार के ट्रंक, वर्क का ड्रॉर, टिफिन बॉक्स, सब राइट, दैट्स आहार. और निद्रा, फिर पेट जो भर जाए, दूसरा नेक्स्ट मतलब पेट जो भर जाए तो आराम करने के मजा आता है ना. निद्रा, फिर भय. So that's again a completely different topic. Some other day we can go through the different effects of the different seven chakras. कैसे हम लोग फंस जाते हैं भय. और फिर जब सब आराम से हो गया तो फिर दिन दूसरे धंधे सूझते, जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन. इसमें सारा जीवन निकल जाता है. क्यों? क्योंकि जो अंदर में वो लॉक्ड अप पड़ी है, कौन हमारी माँ, कौन हमारा स्वरूप आत्मा, उसकी ओर ध्यान ही नहीं. और जब उसकी ओर ध्यान जाता है धीरे धीरे, that's when it activates, that's when it starts to move as if, these are my words, right? ये shake, vibrate, जो भी स्पंदन, शास्त्र में स्पंदन शब्द आता है, starts to vibrate, starts to move, wants to come out, is recognized, finally realizes कि wait, I need to get out, I have been bound. Why do I have to feel bound? Why do I have to feel pressured? Why do I have to feel ये चिंता क्यों, भय क्यों, कोई भी नेगेटिविटी हो? मेरा स्वरूप अफाट है, विराट है, इनफाइनाइट है. I don't depend on anyone, right? I'm part of the creator. I'm one with the creator. जितनी जितनी मात्रा में उसको ध्यान देंगे, साधना करेंगे, है ना, संत, शास्त्र, गुरु के तीनों की सहायता से उतनी प्रगति होती जाएगी. कहते हो कुंडलिनी जागृत होगी, जो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच जाएगी, like completely, totally experience yourself as everything in you, and you and everything. So your question was Atma hai kahan, right? No, so I was confused, like, is Atma one of the bodies that you are referring to, or is it completely different? The latter. It is not the body. So जैसे अगर मैं कार में बैठ गया और अभी ठंडी है इसलिए मैंने बड़ा सा जैकेट, ऊपर से ब्लैंकेट भी डाल दिया, और उसके मेरे नॉर्मल कपड़े भी, मेरा शरीर भी है, लेकिन मैं उन तीनों से अलग हूँ. न मैं मेरा शरीर हूँ, राइट, न मैंने जो जैकेट पहना है वो हूँ, न वो शरीर और जैकेट पहन के गाड़ी में बैठा और जा रहा हूँ, वो तीनों में से कोई नहीं हूँ मैं I'm still someone different. ऐसे ही आत्मा is not none of these. Atma is the ruler. You said the man was one of it, right? And the third one was the cause. Right. It's yeah. स्थूल, सूक्ष्म और कारण. स्थूल मतलब gross, matter, जड़, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, है ना. We can kiss it, we can lift it, we can do whatever, we can throw it, right? We have to drag it everywhere. That जड़ जो हो, matter से जो बना हो, पदार्थ से बना हो, जैसे ये है, हड्डी है इसमें, there is solid in it, there is liquid in it, and there is gas in it, you know, right? So space, in other words, air. So that's स्थूल, and the one inside it, whatever is going with it, जैसे the air in it, जो प्राण हो, life force, whatever forces because of which I'm understanding what is being said. अभी जो मैं शब्द कह रहा हूँ, कानों से जा रहा है ना अंदर, तो क्या कान समझ रहे क्या शब्द को? नहीं ना. कानों को क्या समझता है? कान तो ऐसे ही पड़े, नाइस डिजाइन, परफेक्ट ऑरल डिजाइन, लेकिन इसको कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन यही तो सुन रहा है. तो फिर समझ कौन रहा है ना? कोई तो समझ रहा है अंदर. तो वो दैट इज द नेक्स्ट लेवल, जो सूक्ष्म शरीर का, जो भी समझ रहा है वो सूक्ष्म शरीर. तो ये दोनों है, आए कहाँ से, क्यों आए, सिचुएटेड किस में, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज, द ओरिजिन ऑफ इट. दैट इज, जैसे कोई फल का जूस पिया हो, तो फल कहाँ से आया? पेड़ से आया. पेड़ कहाँ से आया? बीज से आया, राइट? इट्स लाइक गोज कीप्स गोइंग. सो बट you or me, we're none of those as the Atma. Then you said, but then where is the Atma if it's not none of these three? And I told you शास्त्रों के आधार से कि दो interpretations है कि उसका जो पुरुषत्व है, वो कहते हैं हृदय में स्थित है. उसकी जो शक्ति है, creativity है, the sound, the power, and the energy and the creativity, right, is in the Kundalini. So I don't know what more to say on this topic. Like I said, it will take time. We good?
should we do at least one slok? This now you know कि 3 साल हो गए अभी तक 5वें अध्याय क्यों out of पड़े, right? But we have fun at least we have fun with these sessions, right? We need like I have a lot of fun. I don't know about you, but we have a lot of fun with these sessions. और fun के साथ साथ काम भी बनते जाता है. So last time we had said कि one of my favorite sloks, yoga yukto vishuddhatma vijitatma jitendriya sarvabhutatma bhutatma kurvannapi nalisyate. This is number 7. So जो योग इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा है जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता. So you might remember, I don't think any of you were there. I think you were there and you were there. I like this sloka for 2 reasons, right? It's one of my favorite slokas for 2 reasons. One is its power. जैसा जैसे इसको समझेंगे, बहुत ही powerful, बहुत ही strong, strengthening, empowering श्लोक है. योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. So we will decode it for the benefit of those who weren't here. I'll repeat that. The second reason why I really like this sloka is that my name is in it. When you say that, you change your Yeah. Why not? My parents did good. I'm not sure if they knew. इसमें आगा करके. So this is a pretty loaded slok, obviously. 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग. The name of the chapter is Karma-Sanyasa योग. सारे कर्म से छुट्टी कैसे मिले, कर्म से संन्यास कैसे मिले. इसके पहले के अध्याय में भगवान ने कहा था कर्म से छुट्टी ही नहीं मिल पाती. Yeah. We are going in total opposite direction. Yeah, and then so Arjun asked him, like, what? Tell me, come again. I don't get it. How come? He even said, you're confusing me. पहले एक बात कह रहे हो, दूसरी बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हो. 2 में से जो श्रेय होगा, जो श्रेष्ठ होगा मेरे लिए वो कहे करके, है ना? So it's in the Q&A form, the conversation form. But anyway, this chapter is about कर्म से काम बंद कैसे हो, सब छुट्टी कैसे हो. So in it he is describing कि actual कर्म नहीं बंद होते कभी, मरते दम तक, है ना? बिल्कुल the only time कर्म बंद होंगे जब दूसरों को उठा के ले जाना पड़ेगा, तब तक. And we don't want that. We all said it, right? So कर्मों से नहीं छुट्टी होगी, फिर भी कर्मों से संन्यास मिल सकता है. कर्मों का जो बोझा हो रहा है, इसके जो इफेक्ट्स फील हो रहे हैं, उसका जो स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है, चिंता लग रही है, भय हो रहा है, ये सब बिल्कुल छूट सकता है. उसके बाद जैसे मशीन के नए कर्म हो सकते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल उसका कोई असर नहीं हो सकता है. नेगेटिव इफेक्ट, उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो सकते, है ना? जैसे गन्ने का रस, वो मशीन होती है ना, इसमें से रस तो पी सकते हैं, उसका जो चौथा होता है उसका फेंका दिया जा सकता है. तो भगवान कहते हैं कि कर्म माने जैसे वो खाली चौथा होता है उसका जो फेंक देते हैं ना, उसका that's karma. That the point is not the karma, लेकिन जो रस, मीठा रस पी रहा है, वो कर्मों में से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, the lesson that we learn from the karma is like drinking that sweet juice, sweet nectar. So don't pay too much attention to the actual chore, actual task, but really put more attention to the purpose behind it, the point behind why am I doing what I'm doing. In the teaser chapter, we left it a year ago. We talked about this key. At the beginning of each task, we have to identify the purpose behind it. In fact, to the point that Bhagwan जब Bhagwad Gita जब मुंह खोलते हैं, पहला शब्द जब कहते हैं, तो अर्जुन रोता है, प्रश्न पूछता है, ये वो तो ना, the very first word that God says in Bhagavad Gita is kutasva, which means why. So there must be a big symbolism behind it. अगर भगवान को मुंह खोलना है, तो ये छोटे बच्चे जिसके दिमाग खराब कर देते हैं ना बच्चे, why, you might remember, कहता है, इसको भी क्या हो गया, भगवान भी मुंह खोल के, the first thing he asks is why. Right? So, and the point of it is, why are you doing what you're doing? What's the purpose? Have you thought about the purpose behind existence? Why you're doing whatever you're doing? So that's a big lesson for us, that we really do have to think about the purpose.
purpose of this life, purpose of existence, purpose of anything that we're doing. In minute form में अगर purpose behind doing whatever we're doing, the choices we're making. बच्चों के साथ अगर जिद कर रहे हो, अटक गए हो, अपनी हेकड़ी हो कि ऐसा ही हो वैसा हो, so if we start thinking inside about why is that necessary, why is that starts to resolve a lot of problems. अपने आप को ही अगर question करें, why पूछे अंदर में, so it really starts to solve a lot of problems. अंदर ही अंदर resolution होने लगता है, right? But obviously that's not the point of it. That's my interpretation of it. We have to give significance to the word why. So God said He could have chosen any word to start with, and He's perfect. Therefore, His language is perfect. His choice of words is perfect. Everything is perfect. Nothing less than perfect ever. And if He chooses to start with why, then I must pay attention to it, right? His last word, by the way, yathechasi tatha kuru. Kuru is the last word, do. Right? So, first word was why, last word was do. So, I'll leave it to you. Like, whatever you want to make of that. देखो भगवान का भगवानपन कहते कि मैंने जो कहना था कह दिया. यथेच्छसि तथा कुरु. Do as you wish. यथा इच्छा तथा कुरु. यथेच्छसि तथा कुरु. तेरी जो इच्छा वो कर. Go do what you want. Fight. If you want to fight, fight. If you don't want to run, if you don't want to fight, go run away. Suit yourself. है ना? So I think that's a role model for us also. कि जिसको सब जानता है, जो सब जानता है, जिसका सब कुछ है ना? भगवान कहते हैं बीच में कि मेरे करने लायक यहाँ कुछ काम ही नहीं है. In the Bhagavad Gita, actually there's nothing worth my doing. और ऐसे मेरे प्राप्त करने योग्य भी कुछ नहीं. सारे संसार में कृष्ण से कि there's nothing in the whole cosmos that's worthy of me. कि इसके लिए मैं लालच हो जाऊँ कि काश मुझे ये द्वारका मिल जाए, काश मुझे ये हस्तिनापुर मिल जाए, या काश मेरा मित्र जीत जाए. There's nothing worth me, है ना? और मेरे करने लायक भी कोई नहीं. और ऐसा कुछ है, तीन बातें कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो मैं चाहूँ और मुझे प्राप्त न हो, संकल्प मात्र से, क्योंकि ये सारी सृष्टि मेरे संकल्प से बनी है. In the 10th chapter he says कि मद भावा मन सा जाता. मेरे मन के संकल्प मात्र से, I thought and therefore it exists. I thought of it and it came into existence, right? So न मेरे करने लायक कोई काम है, न मुझे प्राप्त करने लायक कोई वस्तु है संसार में, और ऐसी कोई है नहीं जो मैं चाहूँ न मुझे प्राप्त हो, फिर भी मैं कर रहा हूँ. Then second part of that shloka says, I'm still doing something. So first word was why, last word was kuru. Yathechasi tatha kuru. Again, totally irrelevant to this. So yoga yukto vishuddhatma. Jo yoga mein yukta ho. Once you sit on the train of yoga, right, once you catch it, तो इसकी पूंछ पकड़ के इसके पीछे लग गए, इसके ऊपर चढ़ गए. Yoga arudastasya uchyate. 6th chapter. Sanjeev Bhai ko last time I had recommended, he's not here today, but like really to read 6th chapter. For the intellectual ones, for the quiet, जो शांत internal thinking जो होते हैं संजीव भाई जैसे है ना, he sits and quietly thinks about it, अंदर ही अंदर ruminate करते हैं, contemplating. A very very powerful chapter. He Chintan, right? Very powerful chapter for those. 6th chapter for that type. उसमें आता है कि जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, it's like 4th or 5th श्लोक in the 6th chapter, जो योग के घोड़े पर बैठना चाहता है, उसके लिए अनासक्त होकर कर्म करना ही साधना है. अपनी आसक्ति छोड़ करके अपनी हट, अपनी जिद, अपनी हेकड़ी बाजू में रख करके जो करने योग्य कार्य है वो करना चाहिए. Through that alone you will be able to ride the horse of yoga जैसे. और कहते जो actually one who has climbed that horse already, जो योगी कहते हैं, the one who is already riding the horse of yoga, going away with it, उसके लिए उसकी स्थिति कैसी होती है? सर्व संकल्प सन्यासी. उसके लिए जहाँ योग का घोड़ा जहाँ ले जाएगा वहाँ जाने के लिए उसकी अपनी फिर कुछ नहीं है कि संकल्प नहीं है. संकल्प ऐसा ही होना चाहिए, ये करना है, वो ये ठीक है, वो ठीक है, वैसा. Nothing left really to do, but because I'm alive, I'll go. I'll do what is there to be done. इस इसकी मन की स्थिति होती है. So योग युक्तो, that's what it means. योग के साथ एक हुआ विशुद्ध आत्मा, विशेष प्रकार से शुद्ध जिसकी आत्मा हुई. आत्मा तो शुद्ध ही है ना? By nature, by definition,
तो नेचर आत्मा से बढ़कर शुद्ध कुछ नहीं, और आत्मा तो विशुद्ध आत्मा क्यों कहा कि आत्मा मलिन हो गई, ऊपर का आवरण चढ़ गया हमारे संस्कारों का, हमारी आसक्तियों का। जैसे आईना, we bring a new mirror home, very clean mirror home, you see exactly as it is के सामने जो ये धीरे धीरे धूल चढ़ गई। अगर साल 2 साल रख दो या 10 साल हो गए तो then it looks like a piece of wood, इतनी धूल चढ़ जाए कि लगेगी it's not even a mirror, I can't do anything with it, I cannot see in it। लेकिन जैसे ही उसको साफ करते जाए तो धीरे धीरे, और फिर स्प्रे कर सारा, फिर तो आईना कह दे क्लीन हो गया। आईना तो क्लीन ही था, है ना, उसके ऊपर धूल चढ़ गई थी। ध्यान द्वारा जैसे जैसे क्लेंसिंग होगा। Stop me if you feel like stopping, if you want to say something, don't hesitate। That is why it's called Vishuddhatma. What you're thinking? Not thinking. I am experiencing the whole cleaning right now. And that's so empowering and beautiful and liberating. At this point, I don't know, because so I started meditating. Like, I made a promise with Krupa. Okay, we made a pact that we will meditate and keep each other on track. So 10 minutes. I got out of that. So every day I would text her. I did my 10 minutes. Did you do or not? 10 minutes. And then, so now I don't know. Sometimes I get late for school, and I have stopped walking because I don't want to miss my meditation. Oh my God. And I do it in the evening sometimes. I get up at 4:20, and that's wonderful. But so that's what I told you. Now I'm facing the inner demons. Yeah, stay at it. The demons that were buried deep down came up the first week, and it was not good. So, and then the fears came up, and so then I couldn't do it. 10 minutes and I would get up क्योंकि बहुत अशांत हो जाती थी. And I'm learning that letting go, first step to letting go of all these feelings is accepting them, and accepting भी नहीं हो रहा है that easy these days. So when you're saying that yes, the cleansing is important, and I don't know, like I was just talking to my sister and saying maybe you're tapping into your subconscious, which is going on, like, and this happens like every day, like 4:20, आँख खुल जाती है, so I just like start. That's Brahma Muhurta. Wow. And that's awesome. When I see things entering, and I'm not aware of myself that what is happening. It is happening in front of my eyes, like all my fears resurface. Oh boy. And then 5:30 I get up, but so I really don't know, but it is so nerve-wracking for me right now. Kabhi itna dar lagta tha ki in 10 minutes I would get up and I would say, that's it, I can't do this because I cannot like I can. How long do you do it for now? Now, yeah, I'm doing still for like extreme. I feel cold and all, so toot jata hai beech beech mein, but then again I sit back. So I think it's more for me. It's not. I wouldn't say I'm thought free or anything, but I sit at least for half an hour now. कभी कभार शाम को नित्या शैली, Dushyant also will join me sometimes. Yeah. Beautiful house. Yeah. Exactly. So sometimes but the thing, the awareness is like, so it has got so many different smaller changes. Like I'm not thought free, but I imagine myself as मैं train पे खड़ी हूँ और हर एक thought एक train है जो pass हो रही है, तो मुझे चढ़ना नहीं है इस train में. That's right. मेरी local नहीं है because I'm from Bombay. That's very good, yeah. I mean, that's exactly, even we both of us have done, like, we tried to do meditation and we have done meditation at other places. But when you're sitting in meditation, there are thoughts which like just keep coming and going. I mean, you get on that thought and okay, no. But, I mean, we are far, far from the inner peace. I mean, right now, we have just started. So it's like, it's still, like in the morning I try to like put some mantras and set, like I don't do it every single day, but I try to do it. I've started making some change. So I try to sit in front of God and do it. And the mantras are going in the background. So that way, I have started doing that, so I get my own time. Before
before the kids wake up or before I get into my daily chores, I want to just sit there and do some breathing, relaxing, so my mind is calm and I'm not rushing into, oh, it's 7 o'clock, I have to do this, or it's 7:15, I have to do this. And I only doing it for 1 week, I see little change in me, like I have calmed down a little bit, because we work as a robot, and as soon as we get up, run here, do this time, kids have to go, this and that. So, but we are far, far from like the inner peace, but I don't know how I will go there, but I'm trying little by little, trying to make some change and sit there. I don't do much meditation. We used to do a lot of meditation, and I said I never get time to do meditation because I have so many things to do in the house. I don't get time for myself to do meditation. But this is something I started doing since last week and trying to make some change. But I don't know how to go to the next step. I have put myself, I'm making 10 minutes for myself, sitting there in front of God, just breathing there, not doing anything. Thoughts are coming in my mind. Yeah. But then what? Is it going to like change, or how will I progress? I don't know what will happen. And is it the right way to do it? That's the other thing. Yeah. It's so that's what do you really like? That's what I wanted to ask you. Is it what I'm seeing? And my grievances were like more with. I haven't shared like with a lot of. I haven't shared with anybody. Only Bishop knows that these are my fears and these are my grievances. And I could see them. I could see them every single day, 20 little ones. And so it was like, last night I'm here. So is it like that? But I kept on seeing the color purple and I kept asking myself, पता नहीं मैंने गलती कर ली. What is beyond this? What is beyond this? I want to know what is beyond that whole just seeing the color purple. And that's when all this started. Or I don't know what. So let's see. And then I was like, do you face your inside first before you like the peace or whatever people talk about? Or do you do you have to make a pact with yourself that okay, इसको कैसे कूद के जाएगा stop it. You're asking me? Okay. I thought you were telling. Oh, no. Don't ever. You are the guru. So you can't fool me like that. Oh my God. I think so. First of all, my experience is that thought-free is a little bit overrated. It's a good thing, and it comes, but you do have to get past that also. It's like intermission. जिस मैंने एक बार कहा था कि कोई मूवी देखे और इंटरमिशन लिखा था पढ़ देते ना हिंदी में वो उसके बाद चले जाए तो हो गया मूवी तो वे अनफुलफिलिंग. आधा देख के चले गए तो फिर क्या कुछ पता नहीं चला बाद में हुआ क्या हीरो का क्या हुआ हीरोइन का क्या हुआ विलन मरा कि नहीं कि क्या कैसे तो जुड़े वो बिछड़े हुए थे वो मिले कि नहीं फिर कौन से बाकी अच्छे गाने भी लगे. तो यू डोंट वांट टू लीव एट इंटरमिशन. बुद्धू न बने इंटरमिशन को इंटरमिशन ही समझे दैट इट्स अ ब्रेक यू हैव टू कम बैक इन इट. सो जो थॉट फ्री स्टेज है दैट्स एन इंटरमिशन. But you do have to get to the intermission stage. It's a good stage. It's a positive stage. It's a favorable stage. It's very good. But it is really overrated. To say, oh, thought free hona chahiye, thought free hona chahiye. My thing about this meditation is my work is my meditation. That's the way I go. And if you do that way, whichever way, like I don't know, people, I have tried, and I do try also. I sit there quietly, and I can go without anything, and I can do night meditation also. So I don't know, with that, I feel like by working and you are taking that meditation with you, it just calms you down when any scenario you take it. Like and that's the way you, like I feel like you don't have the tension of the work also, and nothing bothers you also.
and that works very good with me, for me at least. Like just sitting, I do it, and शाम को भी अगर थोड़ा बहुत time मिल जाता, but I feel like work is the meditation, and if you hold that path, you are done. जैसे कर्म करके ही हमें आगे बढ़ना है. Like whatever you have to do, you have to do. There is, like, you cannot run away from that, and you don't have to run away. And that's what I was going to ask you, like, what I have been seeing is the one generation ahead of us were like so calm and quiet. Like they didn't have the fear, the way she's saying that. And they were very strong in that. Why we have that? What we are lacking in that? Why we are going through that? Yeah. I cannot, like, or maybe what I have seen, like after like at certain age when you go through, then that all things goes away. Like you say that Kundalini chakra, when after certain age it might come up to here and you calm yourself down, and that might be the most easiest way. Yeah. Like recently I was seeing Kiran Bhai's and like his mother's video. Like she passed away recently, and 1 hour before they took the video, and I was just watching the video, and she was like totally aware. She didn't have a single fear in her thoughts or nothing. Like she was so awake. I was like amazed. How come that happened? Like like sometimes people think that like if the death is coming to you, start getting scared or this and that things happen, right? But when I saw that, and I was like, why that generation was like so strong? You didn't have at all any fears in that. Why? Can I just say something? Isn't it true that nobody knows when the death is coming? Yeah. So, I mean, in your example, I mean, you just mentioned probably that the auntie didn't know that her death was coming, so she could not see anything on her face or anything, because she was not aware that this is her last state. But usually what we see is like when the soul is going out, that's what I have been here, like it goes out, it takes her one by one your parts away. And when those parts start shutting down, you feel something inside. And that's what I have been seeing. Like even I saw my father-in-law that way, and my mother-in-law totally different way. Yeah, so maybe their approach for the life was totally different. The way he went and the way she went was totally different. That's what lead them to that path without fear, or like like how do you say the sea, the spiritualism starts. 49. 49. That's what was our discussion. Each chakra has 7 years to grow, 7, and there are 7 chakras, 7 times 7, 49. At the age of 49, you should be very ready for sannyas, right? Like letting go of everything else and refocusing inward. So proud. Am I too young for this? I'm never young for anything. I'm telling you, oh my God, I'm telling you, you're doing the right thing by getting shell and money. Well, by 49, you should have been totally ready. You decide for yourself, but like done, like you're ready to go, leave, not dead, like in ready to live as it is, with no concerns of the world, अपने आत्म स्वरूप में स्थित, like सन्यासी, नित्य सन्यासी बनके, नित्य सन्यासी के लक्षण बताइए, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी के साथ किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल मिले या न मिले, न द्वेष है न कांक्षा है. Right? That by the age of 49, you should be there. That is, nothing matters completely in all circumstances. न किसी का द्वेष है, न किसी की आकांक्षा है. न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो. निर्द्वंद्व हो जाए, lack of all dualities. सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, भूख हो, प्यास हो, जो भी हो, ever the same. सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख का अनुभव फिर भी steady. Like steady state में जब mind हो, that's where you have to be at 49. So I don't think you're too early. I mean, there's like nobody is 49. कैसे स्थित प्रज्ञा रहे? Yeah. So Sthita Pragya was a huge section in the 2nd chapter, right? So like the last portion, last few slokas, like very very powerful, longest chapter also.
तो ऐसे कहा है भागवत में आता है कि एकम सत्यम विप्रहा वदंति बहुधा. भागवत not the Gita but the big 18,000 श्रीमद् भागवत है कृष्ण उसमें कि उद्धव asks कि ये अलग last day of भगवान कृष्ण before he leaves the earth. तो उसके साथ एक ही बच्चा है. उद्धव कहते हैं कि ये कैसे कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, कोई thought free कहता है, कोई thoughtless कहता है, कोई with thought कहता है. Not just about meditation but about anything sadhana. So which one is श्रेष्ठ इनमें से? Which one should I make sense of? So that's when God acknowledges that वास्तव में सत्य एक ही है, लेकिन विप्र जिन्हें पता चला वो अलग अलग अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी अकल से, अपनी एक्सप्रेशन द्वारा उसको डिस्क्राइब करते हैं. So the beauty of Krishna's knowledge is, whether it's Gita or in Bhagavad, is that उसमें नेगेटिविटी के लिए कहीं स्थान ही नहीं है. ऐसा कहीं नहीं कहे कि ये बुद्धू है, ये बेकार है, ये खराब है, इसको फेंक दो. इसमें जो भी जैसे उसमें से अच्छा क्या है, बराबर क्या, उसको उठाया ऊपर चमकाया. So that you can pick what suits you, right? You can pick what makes sense to you and run with it. Because catch any of those, जैसे इसको उठाना हो इस सेशन के बाद, तो हो सकता है ये इधर से उठाएगी. अगर शैलेश भाई होते तो वहाँ बैठते हमेशा, every time, right? He sits there. वो उधर से उठाएगा, या तो कोई इधर से किधर से भी उठाओ, एक कोना उठाए तो सारा का सारा हाथ में आ जाएगा. ऐसे ही, या बीच में भी उठाया तो कहीं से भी उठाया तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि होप स्प्रेड, pick somewhere. The main point is कि kuru. Start it, do it, right? Just do it. Get started on it. So इसमें बहुत चिंता में भ्रम में न पड़े कि is this or that. The most important thing is stay at it consistently. Like no matter which way it is. What I am sharing is only my experience. That never means that that's the full or the complete or that's the only way. It cannot. Whoever claims and says that that's the only way, that's not true. Jesus ने कहा like I'm the only way, right? I'm a lover of Jesus. But उसका interpretation लोगों ने, Christian लोगों ने एकदम अलग किया कि Jesus छोड़ के जो करेंगे वो burn in hell forever. I'm not burning in hell. I'm blissfully living, right? So ऐसी बात है नहीं कि बस एक यही है वो ही, right? I love Krishna and I always talk about Krishna, but I'm not, मेरा कोई आग्रह नहीं कि ऐसा ही बस कृष्ण का नाम लोगे तो ही उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा. इतना जरूर कहूँगा डंके की चोट पे कि कृष्ण का नाम लोगे तो उद्धार जरूर होगा, लेकिन मैं ये कभी क्लेम नहीं करूँगा कि कृष्ण का ही नाम लोगे तो ही उद्धार होगा करके, right? And no real lover of God, no one who understands or has experienced God will ever say that. So इसलिए भगवान ने खुद ही कहा कि एकम सत्यम विप्रा वदंति बहुधा. एक सत्यम है, एक सत्य एक ही हूँ भगवान, लेकिन अलग अलग अपनी अपनी, जैसे कि इतना सारा आसमान देखते तो अपने टेलीस्कोप से अपने टेलीस्कोप से देखते हैं ना, किसी को कोई चांद नहीं दिखती है, किसी को कोई तारा दिखता है. I saw Mars, I saw Venus, I saw this, that. Even the big telescope, the Hubble telescope, is just a narrow slit of the universe. Less than 1,000th of it. So, from what I know and based on what you're describing, my recommendation is to stay at it. Don't give it up. And what I've experienced is it kind of goes in cycles of 6 minutes, thinking about what the. So if you stick it out until like around the 18th minute, you will start to feel like you're calming down, a more positive, a more steady effect. And then you sort of start to get rid of the disturbances. First 6 minutes is just noise, just madness. First 6-7 minutes is just nothing. Keval kachra. You don't know what is going on. How is this meditation? It's like पहले से ज़्यादा बुरे विचार आ रहे हैं. This is like so bad. अरे एक विचार को बंद करते तो दूसरा. हाँ इतना तो मैं कभी. How do I stop all this? ये बिल्कुल सुपर कंप्यूटर से भी कंप्यूटर अच्छा है अपना ब्रेन, यानी we think in so many different levels. I realize यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से सोचते हैं, ताड़ू से सोचते हैं. कुछ लोग यहाँ से भी सोचते हैं. मैं यहाँ से सोचती हूँ. But I'm like, I stopped this. Now it is coming from here. I'm stopping here. It is coming from here. And then But put up with it, right? So दूसरे अध्याय में बहुत. In fact, I was going to talk about it today. फिर मैं भूल गया. अच्छा हो गया कि धर्म के विषय में I was going to talk about it, लेकिन some other time, maybe next time we do the diagram. But one part of dharma is titiksha. संस्कृत में आता है, शास्त्र में आता है. भगवान 2nd chapter में तान तितिक्षा स्वभारत. भगवान कहते कि
ये जो सर्दी गर्मी मान अपमान द्वंद्व जो है, आगम अपायनो अनित्य, ये आगम मतलब आने वाले और जाने वाले हैं, और अनित्य हमेशा के लिए टिकने वाले नहीं है, ट्रांजिएंट है, मोमेंटरी है, just like the thoughts in our head, right, constantly coming. Agam apayano anitya tan titikshasva bharata. Bharat is one of the names of Arjun. So कहते कि इसकी तितिक्षा कर, steadily सहन कर, खड़ा रहे, watch it, let it happen, don't fight it, let it pass through you. तान तितिक्षस्व भार, ठंडी बज रही है तो उसके साथ मत दो, you don't freeze with it. Now let that cold wave pass. गर्मी हो रही है तो you don't melt with it. है ना, अपमान हो रहा है तो उसके साथ तू भी चिढ़ मत जा रहे, उसके लिए उसको रिएक्ट मत कर. कोई मान दे रहा है, हार पहना रहा है तो बहुत एक्साइटेड मत हो जा, है ना. जो भी निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसकी तितिक्षा कर, steadily watch it, but very strongly stay put, don't give up, don't let go. Titiksha is a very powerful word in Sanskrit. Tan titiksha svabharata. So what we need at that stage is titiksha, like sit tight and let it happen, let it go, let it pass, and you will get to that stage. Thought free bhi aayega, it does come, but I will tell you again, this is my experience. That's all it is. Take it for what it's worth. But you will want to get past thought free experience. That's like intermission se samadhan nahi hoga. Aadhi movie dekh kar ke itna aanand nahi aayega. So like you will be left with more questions than answers sometimes. Like so what? And now the big question is, so what? Void है, vacuum है, what does it mean? है ना, तो मुर्दे जैसा लगेगा फिर कि क्या, so what's the point of any of this, right? And so you do have to go past that, and then that's when the most beautiful vista opens up in front of you, like you have never seen before. Itna sundar vishwa, that mind-blowing beauty cannot be expressed in words. One person cannot give that experience to the other. Every person has to experience it for themselves, and so for herself. That is the most awesome. That's when the release, the liberation, the mukti, jo prem ka anubhav hai. That's when you experience love for the first time ever. Jab bhi prem kehte, that is not the real. That's a shadow of my. The thing sitting here, that black, that's not me. This is not my hand. So it looks like my hand, so maybe it is my hand, but it's not. जैसे अभी जो हम प्रेम को कह रहे हैं, प्रेम है. Even the mother's love on the son or the daughter, although that comes closer than any other, but still is not the real kind. That's when you experience the real love. That's the love of God. Avani yato vacho nivartante saddham. संस्कृत में आता है कि वहाँ पे जाके वाणी रुक जाती है, वाचो वापस आ जाती है. I can't describe. I don't know how to tell you what love of God is like. So, इसलिए it's worth it. यहाँ तक अगर आ गए तो why it's worth it. Put up with it. Those demons are they're not real demons, right? So face them absolutely, because once you face them, they'll go. Once they see that they have no effect on you, you actually don't get scared. You don't run away. You don't get up from meditation. तो भूतड़े जो घुसे हुए होते हैं, once they know, then they'll just basically उनका काम हो गया फिर, right? They'll go away. I did get up like for 2-3 days, and then I went like, okay, I'm sitting. That's okay. It's fine. I'll just sit through it, and I'll do my 30 minutes no matter what. I'm doing my time right now. I just kept telling me. Yeah. What helps a lot, what helped me a lot, is to have then, ये जैसे निराकार, निर्गुण साधना है, खाली ध्यान करो, void है, thought free. उससे आगे अगर निकलना हो, सचमुच में प्रेम का अनुभव करना हो, आनंद का अनुभव करना हो, तो then that's when साकार सगुण ब्रह्म भगवान का महत्व आता है. Chapter 12, this is also from the Gita. Nothing is outside of the scope of Gita. Arjuna asks, it's again a question कि इधर तूने ब्रह्म के विषय में बात करी, निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना, कुछ नहीं है, ये वो सब, और अभी तू अपने लिए कहता मैं भगवान हूँ, है ना. 11th chapter में, उसके पहले चैप्टर में विश्व रूप दर्शन में अपने आप को दिखा दिया भगवान ने, भगवान का रूप. show me the money, so he shows him the money, right? Look, I am God, and there's like every God that you can imagine, any God you have heard of, you can see it in me. विश्व रूप दर्शन में 11वें अध्याय में दिखाते हैं. शिव भक्त हो, ब्रह्मा की उपासना करता हो, किसी माता हो, अम्बा हो, यमराज हो, अग्नि हो, भूतड़ा हो, जो दैत्य हो, जो सूर्य हो, किसी को भी, whatever you imagine,
you will see it in me, right? So, and he's able to see it. So then Arjuna asks, then is that, are you God? Like, or as the Brahma कहते हैं, मैं किसकी उपासना करूँ? Who should I worship? How should I worship? So in it, Bhagavan answers in the 12th chapter, the shortest answer, the sweetest chapter, the sweetest, beautiful chapter, right? 12th chapter, especially in Hindi. Sanskrit में तो कहे ही क्या, right? But in Hindi, English doesn't get as close to it. But Hindi में, उसमें वो कहते हैं कि अंत में दोनों उधर ही आते हैं, जो निर्गुण निराकार की उपासना करेगा, ब्रह्म तत्व की उपासना करेगा, प्रकाश की उपासना करेगा, जो भी, और जो भगवान के रूप में सगुण और जो गुण थे, लीला थे, उसका नाम था, वो ये करता था, वो करता था, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह पाएंगे, एक ही बात का अनुभव करेंगे. लेकिन जो निर्गुण निराकार की उपासना करेगा, उसमें दुख बहुत है, लंबी यात्रा है. There is a lot of tests on it. There are a lot of chances to fail on that path. खड्डे खुड्डे बहुत है, टायर पंचर बहुत बार हो सकता है. एक ही स्पेयर टायर लेके चल रहे हो तो मुश्किल है उस रास्ते से जाना. You will need a lot. Your trunk should be filled with spare tires if you're going on that. I mean, obviously this is my words. लेकिन जो सगुण साकार के रास्ते जाता है, किसी भगवान के रूप को मानता है, किसी भगवान के नाम को मानता है, किसी भगवान की लीला हुई थी इसको मानता है, उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि फिर वो मेरी गाड़ी में बैठ जाता है. खड्डे खुड्डे में नहीं फंसता है ना उसकी गाड़ी, कि वो लेविटेट होती है. नेवर टचेस द रोड एज इफ. अगेन these are my words. ऐसा कहीं गीता में नहीं कहा. This is just my on the fly impromptu interpretation of. So Is that where you become sakshi? Like you said, you let God drive it, right? In a bhakti yoga, meaning that's a totally samarpan. Am I right? yes, kind of. In that samarpan, it's like all acceptance, nothing else. Yeah, kind of. Aligned, God aligned. So yes, dependent on really aligned. Not that way. I know. You said we still have to do karma, keeping God in the center, keeping Krishna in the center. So is that So yeah, that is a different thing. It's a Karma-Sanyasa and karma Yoga. Okay, in karma yoga we keep the Krishna in center, or is the Karma-Sanyasa? Krishna is always in the center, dear. Karma yoga probably from what I got was like कि हम हर चीज कृष्णा के लिए कर रहे हैं. Like we imagine कि हम कर रहे हैं उसके लिए, so we do the best without. And it's more like self-centered now. अपने लिए नहीं कर रहे. फिर then we will figure out किसके लिए कर रहे हैं. वो next chapter, लेकिन right, but पहली बात ये हो कि अपने लिए खाली अपने स्वार्थ से नहीं कर रहे. Self-motivated, for me नहीं कर रहे. That's the beginning of karma yoga, right? In fact, that is the chapter that we were trying to start right today. Karma-Sanyasa yoga. That's the chapter also. I think we're coming to the end. योगा युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा, जो अपने आत्मा को जीत लिया, जिसने जैसे मतलब अपने आत्मा के साथ एक रूप हो गया. न वो भजन गाती है ना मन सब, कौन सा अपने आप को जीते वाला भजन, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे. That's the idea here, विजित आत्मा की, अपने आत्मा में स्थित, not perturbed, not disturbed, not shattered by दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, not influenced by what other people do, say, think, whatever. अपने आप में स्थित, right? And that automatically happens when we understand who we are, when we know who we are, because that is the most powerful that you've ever known or seen. Forget about the greatest person on the earth that you know of or heard of. There cannot be anyone half as great as you. It's impossible. It is impossible. हो ही नहीं सकता अगर भगवान है तो. कि ऐसा कोई व्यक्ति आज तक इस पृथ्वी पर चला हुआ हो, जब से बनी, जो जितने तुम श्रेष्ठ हो उससे आधा भी श्रेष्ठ हो सके. इनफैक्ट आई विल से कि सबको इकट्ठा कर दो, सब गांधी, सब ये सबको मिला के कहे कि अच्छा अपने आप प्रयास करो, इसके आधा होके दिखाओ, नहीं हो पाएंगे श्रेष्ठत्व में. अब तुम मतलब तुम ये पुरुष नहीं, तुम ये स्त्री नहीं, राइट? ये नाम और रूप धारण कर लिया कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं चिंतन हूँ, मैं वैभव हूँ, जो भी हूँ. I'm not talking about that you. I'm talking about you, the real you. ये जो विजित आत्मा शब्द जो आया ना,
जो आत्म रूप से जो हो प्रत्यक्ष वास्तविक स्वरूप जो है तुम्हारा, अभी तो स्थूल शरीर को मैं मान रहे तो उसकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं. I don't really care much about your स्थूल शरीर. I don't care how pretty you are or how rich you are, whatever. Keep it. है ना, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर की भी नहीं बात कर रहा हूँ और कारण शरीर की भी नहीं. उसके आगे वाला जो जो तुम है ना, जो तू मैं, I don't know how else to say. I think you're understanding it. उसके साथ जिसने तादात में हो गया, एकत्व हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, I am that, अहम ब्रह्मास्मि, राइट. सो वो स्थिति जो योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, we talked about that, चितेंद्रिय, जिसके इंद्रिय संयम है, the one who doesn't get dragged by the senses. कि आंखों है ना, जैसे कहते हैं शास्त्र में का उदाहरण आता है कि घोड़े की लगाम पकड़नी अपने को, घोड़े की पूंछ नहीं पकड़नी है. There's a big difference. घोड़े के चढ़ के लगाम पकड़े थे, you will take the horse where you want it to go. घोड़े की पूंछ पकड़ेगा, you will be dragged where the horse wants to go. है ना, ऐसे तो जितेंद्रिय वो है जो अपने घोड़े पर बैठा है, जो लगाम रादर लगाम पकड़े है, जिसने आंखों से वही देखा है जो देखने योग्य है, जितना देखना योग्य है ना, जो कानों से वही सुन रहा है उतना ही सुन रहा है जितना योग्य है. योग्य क्या है, जो पोषक है, शोषक नहीं हो, जिससे मेरे आत्मा का पोषण हो, शोषण न हो, एनर्जाइज हो, ड्रेन न हो, थकान न हो, जिससे और एनर्जेटिक लगे, राइट, शक्ति पूर्ण लगे. पर ये बात सबके अंदर में छिपी हुई है. किसी एक ही स्टेट, किसी एक कमाल नहीं है, किसी एक हक नहीं, सबका उतना ही हक है इस बात पर. यानी विवेक बुद्धि सबके अंदर में है कि क्या देखना ठीक है, क्या देखना ठीक नहीं है, कितनी देर तक कितना देखना ठीक है, कितना नहीं ठीक है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्पर्श करना, किसे स्पर्श करना चाहिए, कैसे स्पर्श करना चाहिए, कितना स्पर्श करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए. वी नो इट, है ना. तो जिसका उस पर नियंत्रण है, जो अपने काबू में रख पाता है, लगाम जिसके हाथ में है, जिह्वा से हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों से, जो मुख से बोलना कितना बोलना चाहिए, या बकबकी करते रहनी चाहिए, या कैसे बोलना चाहिए, है ना, जब मीठी वाणी हो अथवा कड़वी हो, कैसे. स्पर्श की बात होगी, रूप की बात होगी, देखना, रस खाने पीने की बात रहे, कितना क्या खाना, कैसे खाना, कितना, और गंध कितना सूंघना, क्या सूंघना, नहीं सूंघना. जैसे पुण्यो गंधम पृथ्व्याम तेजश्चास्मि विभावसौ, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, जो पूछता है अर्जुन की तेरे को जानू कैसे मैं, भगवान तो मान लिया, लेकिन तू इतना जो 4 मेरे आगे 6 फुट का खड़ा, उतना ही भगवान है कि और जगह पे अलग अलग. You say that you are in everyone and everything. How can I experience you? How can I see you in everything? Can you tell me how? फिर उसमें जो डिस्क्राइब करते विभूति योग में 10वें अध्याय में, जल में मैं रस हूँ, the fluidity, the quality of fluidity in water, for example. चंद्रमा में मैं उसकी सौम्यता हूँ, है ना, उसकी ओर देख के जो सौम्यता का अनुभव होता है. ऐसे अलग अलग 100 एग्जाम्पल. उनमें कहते पुण्यो गंधम पृथ्व्याम, पृथ्वी में जो गंध है, जो नेचुरल हर्ब्स है, जो पोषण करने वाले गंध है, जैसे राड़, ऊद, गूगल, ये जो बातें हैं ना, चंदन, जो पृथ्वी से निर्मित है, नॉट की केमिकल से बने हुए जो अगरबत्तियां लगाते हैं हम लोग. तेजश्चास्मि विभाव, तो अग्नि में तेज मैं हूँ. ऐसे अग्नि का क्या मतलब है, इसमें तेज न हो, न चूल्हा जले, न गर्मी लगे, फिर वो अग्नि को कौन पूछे, है ना. तो इसमें जो तेज शक्ति वो कहते मैं हूँ. जीवनम सर्वभूतेषु, कि सभी जीवन, अगर हम तो मुर्दे हो जाए इसमें से अगर जीवन निकल जाए तो इसका क्या मतलब हो. सो इस प्रकार से अलग अलग. एनीवे द पॉइंट ऑफ दिस इज जितेंद्रिय, जो इन बातों को ध्यान करके realizing that I am Atma, I actually don't need any of this, है ना. I don't need, मेरी स्थिति, मेरा आनंद इस पर निर्भर नहीं है कि सुंदर व्यक्ति या वस्तु दिखाई देती है या नहीं, कि अच्छा संगीत सुनने मिलता है या नहीं, कि अच्छे व्यंजन खाने मिलते हैं या नहीं, अच्छी सुगंध हमेशा रहती है या नहीं. I don't depend on it. I actually am only the experiencer of it. If I wasn't there, all of those things would still be there, but would mean nothing. They mean what they mean because I experience them, right? And then intelligently thinking about them, श्रेष्ठ कौन हो उनमें से, the experiencer, or that matter that is being experienced, the experiencer, right? चेतना तो उसमें है, चैतन्य उसमें है, awareness, comprehension, understanding. So that's the जितेंद्रिय भावना. So yoga yukta विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, जो ये अनुभव करता है, देख पाता है,
वास्तविक में वो जिसका आचरण ऐसा है कि सभी भूतों में जो आत्मा है, भूत अर्थात जो आकृतिधारी, जिस किसी ने भी आकृति धारण करी है उसे भूत कहते हैं। तो ऐसा जो देखो कितने भूत बैठे यहाँ पे तो बहुत डरना चाहिए, भागना चाहिए। वास्तविक भूत का वेश में रहा है, लेकिन देखो सफेद पहन के बैठे। तो सर्वभूत के आत्मा, आत्मा ना मराठी में संस्कृत में अंदर कहते हैं, सर्वभूता आत्मा भूत आत्मा, मेरे अंदर जो है वही तेरे अंदर भी है। ऐसा ही नहीं जैसा मेरे अंदर वैसा ही तेरे अंदर नहीं, जो मेरे अंदर वो ही, not like, not similar, the exact thing, identical, one and only, Advait, and not two, there is only one। जैसे अभी सपने में कहते हैं, सपना देखते हैं तो हजार लोग देख लेते, सपने में 100 लोग देख लेते, सब 100 लोगों में एक सपने देखने वाला ही होता है ना। तेरे जैसा तो दूसरे में नहीं होते, तू ही होता है। सारे सपने में जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब में एक ही है ना, स्वप्न दृष्टा ही होता है। ऐसे सर्वभूतात्मा भूतात्मा जो अपने आप को सब में देख पाए, सब में अनुभव कर पाए स्पष्ट रूप से, इतना माना हुआ नहीं, कहते हैं तो नहीं। कभी ये जो मेरी बात मान रहे हैं, मेरे जैसा कोई उनमें मेरा आत्मा है, ये गधे हैं इनमें मेरा आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं, जो गधों में भी, बेवकूफों में भी, डोनाल्ड ट्रंप में भी और हिलरी क्लिंटन में भी अपनी आत्मा को जो देख पाए। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, ये कर्म संन्यास हो गए। वो करते हुए सब करेगा, जो करना जरूरी सब करेगी, करेगा जो भी होगा, लेकिन उसको ले पाए माने, चिपकेगा नहीं उसकी इफेक्ट। नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्ट्स, द रिएक्शंस, बाय द इफेक्ट्स ऑफ कर्म। जो भी करना पड़े, जो भी किया जाए, फिर उसका बोझा नहीं महसूस होगा, फिर उसकी थकान का अनुभव होगा, फिर किया क्या न किया का उसका कोई मतलब नहीं होगा। कर्म कभी नहीं छूटेगा, लेकिन कर्म के सारे इफेक्ट्स जरूर छूट सकते हैं, एज इफ यू आर डूइंग नथिंग, है ना। तस्य कार्यम न विद्यते, ये भी गीता से, उसके लिए कुछ करने लायक बचा भी नहीं है, कुछ कर रहा हो ऐसा अनुभव भी नहीं होता है। इनफैक्ट द श्लोक वी वर सपोज्ड टू डू टुडे, इट सेज दैट, हिंदी में कम से कम पढ़ लो, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, दिस इज संस्कृत, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो फिर वो करता क्या है ना, ऐसा व्यक्ति कैसे क्या करता है? तत्व को जानने वाला योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। तो सारा कर्म किया, लेकिन अनुभव यह कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, उसका ऐसी धारणा हो जाती है, ऐसा पहराव हो जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया ना। क्योंकि पता ये सेंसर्स है, दीज आर जस्ट द सेंसर्स। जैसे जीवा पर, हमारी जीवा पर कितने 28,000 लिटिल डॉट्स ऑन वन टंग, 28,000 डॉट्स, एंड ईच हैज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोटेंसी। कहीं पर तीखा ज्यादा लगता है, कहीं पर खट्टा ज्यादा लगता है, कहीं पर राइट, कहीं पर मीठा। अलग अलग जगह पे देखे अपनी जीवा पर, अलग अलग जगह पे अलग कम ज्यादा लगता है। वही चीज एक जगह पे ज्यादा मीठी लगती है, एक जगह पे कम मीठी लगती है। सो देयर इज अ पैटर्न देयर। गर्मी भी एक जगह पे ज्यादा लगती है, एक दूसरी जगह पे। So there are 28,000 sensors on the tongue to sense different things. There are thousands of वो जो drum, हमारा ear drum जो vibrate होता है, ये आँखों में there are more than 1 million optic nerves in each eyeball, more than 1 million sensors in each eyeball to understand the different things that are being perceived. तो जैसे sensors है, अलग अलग ग्रहण कर रहे, ऐसा वो मान लेते कि मैं सारा का सारा, this whole thing is a sensor of the one who is sensing, जो अनुभव कर रहा है। इसके लिए एक यंत्र मात्र है मेरा शरीर, राइट। इसके द्वारा मैं जो भी कार्य किया जा रहा है, जैसे जीवा कभी नहीं कहती कि नहीं, इट अंडरस्टैंड दैट इज जस्ट अ सेंसर। जो भी खा रहे हो जीवा के लिए नहीं है, राइट। जो भी हम लोग खाते, मीठा भी खाते तो जीव के लिए तो नहीं खाते ना, अपने लिए खाते हैं। तो देखो जीव हमारे से ज्यादा अकलवान है। जीव जो रखते, जीव को तो अपने आप पकड़ के नहीं रखती, या दिस माइंड अपने आप नीचे जाता है। यहाँ तक आता है ये पकड़ के नहीं रहता कि नो नो दिस इज माय रसगुल्ला, नीचे चले जाता है।
हाँ, पेट में भी जाता, पेट भी अपने आप को नहीं पकड़ रहता है, 72 घंटे बाद कर देना, I got what I wanted, take it away, right? Anything, you drink water, दारू पीते भी पीते हो, जो भी, nothing. The body is intelligently designed, by design it is intelligent. अपने आप intelligent नहीं है. लेकिन हम देखो जो भी मिल गया पकड़ के रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को, राइट, उनके स्वभाव को, या अपने काले बालों को सफेद नहीं होना चाहते हैं, अपने घर को, अपनी गाड़ी को, whatever it is, we want to hold on to it, grab on to it. We don't want to, right? And that's sannyas, right? We talked about that. Sannyas is letting go. फिर झक मार के let go करना पड़ता है, जूते खा के let go करना पड़ता है. उससे बुद्धिमानी है कि अब समझदारी से अपने आप let go करना सीखे. उससे भी ज्यादा बुद्धिमानी की let go की स्थिति में ही हो जाए, कुछ चिपके ही नहीं, न लिप्यते, है ना, जिसका लिप चिपके ही नहीं. इसके आगे का जो श्लोक आता है, चलो वो मेकिंग गुड प्रोग्रेस, we'll end with this. लिप्यते न पापेन पद्म पत्रम विमाम फसा. पद्म पत्र मतलब कमल का पत्ता, जो पानी में रहता है उस पर पानी नहीं टिक पाता ना, बार बार रख दे तो नीचे गिर जाता है. जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, फिर कुछ चिपक नहीं पाता. कर्म नहीं, कर्म का इफेक्ट नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, प्योरिटी, ओरिजिनल नेचर, अनकंटामिनेटेड, जैसे बनाए थे, जैसे थे वैसे, जैसे है वैसे. That's our विशुद्ध आत्मा. That's our pure nature that we recognize. And we will pick up next time. We'll pick up with this slok. That's the idea in Karma-Sanyasa. So I know we went all over the place today, like really everywhere. But again, it's okay. We will tighten this next time. Right? We'll make sure. Next time, what promises, I also want to walk through the schematic diagram of the first chapter. What I really wanted to talk about today was we couldn't even touch it. So maybe I'll just save it, which is, it was in my email, the monthly email that I'd sent, कि Bhagwad Gita का सार, accord मेरी समझ में जैसे आया, जीवन कैसे जिए, how to be, right? We have to live. So that sort of the three fundamental principles for me that I've picked up from Gita, and I try to live by that. एक धर्मनिष्ठ जीवन हो, right? Ever dutiful. धर्म को समझ, मेरा धर्म क्या है? Not Hindu, not Christian. मेरा धर्म क्या है? धर्मनिष्ठ, शरणागत, ईश्वर के शरणागत और अपेक्षा रहित. धर्मनिष्ठ जीवन हो, शरणागत जीवन हो और अपेक्षा रहित जीवन हो. I see like everything coming together, just three circles, they are all coinciding in just perfection. Like really coming close to the experience of God through these three. If we're able to, jitna nazdik in तीनों को ला सके, धर्मनिष्ठ, really committed to my duty and nothing, no selfishness, right? Selflessly dutiful, ever dutiful, uncompromisingly dutiful. शरणागत, लेकिन उसने authentically like God aligned with His ways, with His laws. अपनी नहीं, अपनी अलग से सृष्टि निर्माण करने की नहीं, God aligned. और जितनी अपेक्षा कम हो, यहाँ तक कि अपेक्षा रहित हो जाए, free from expectation, no expectation. One of the things we said was expect nothing, accept everything cheerfully, right? That's what the Gita has given me. I expect nothing. I do accept everything. I'm always cheerful. I challenge you. Catch me when I'm not cheerful. I will definitely give you $1. Every dollar that I have. So you can have it too. You deserve it. You should have it. Why do you want to settle for anything less than that? Why is this mine and not yours? That's why we go from home to home to home to distribute this. So that's the promise of the Gita. This is what we get when you say Krishna's name, like you did today. So Jai Shri Krishna. So हम लोग 5 minute ध्यान करते हैं, right? And then